Uh, the best part is that we can employ people and we can give the employment opportunity most of the people those who come with the skills to our door. So this is the best part कि एक फैमिली हमारे वजह से अगर चल रही है किसी एक भी आदमी एम्प्लॉय होता है अच्छा उसको अच्छी सैलरी मिलती है तो उसका पूरा घर चल जाता है उससे. So this is the best part I think, and I've seen people of the potters community. We used to visit to potters community in their villages. So initially वो अपने बच्चों को इसमें employ करते थे, खाना मतलब उनको स्कूल भी नहीं भेज पाते थे. Now they are able to send their children to school, और अभी वो खुद employ कर रहे हैं दूसरों को. So this is the best part in the entrepreneurship. So hello Mr. Dubey, how are you doing today? I'm good, thank you. आप बताइए कैसे हैं? I'm doing great and glad to hear that you are doing great in this pandemic, and I hope your family stays safe. So without any delay, let's start our interview. And my first question to you would be, how did you get your idea or concept for the business? Idea and concept, see, by observing, we chose tea as our prime product because the reason being it is the highest consumer beverages on planet after water, as I said in many interviews. So the demand was already there in the market. So to sell anything which is already in demand is quite easy. Otherwise, you have to cash burn in the marketing, right? For example, जैसे कि चाय है, चाय बेचने के लिए आपको ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती अगर आपकी चाय अच्छी होती है. Whereas अगर आप कोको कोला बेच रहे हो जहाँ पे जिसकी कोई as such डिमांड नहीं है तो उसकी डिमांड क्रिएट करने के you have to pay the celebrity to do the ads. तो जो आइडिया है ये आइडिया है बाय ऑब्जर्विंग कि डिमांड किस फील्ड में है एंड हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट भी कम था. सो इन्वेस्टमेंट अगर किसी चीज में कम रहता है तो हम लोग ज्वेलरी की का स्टार्टअप नहीं कर सकते थे, रियल एस्टेट का स्टार्टअप नहीं कर सकते थे. सो बाय डिफॉल्ट वी हैव टू एंटर इन द F&B, एंड इन F&B वी चोज chai as our prime product. So this is all about the idea. That's quite interesting for a chai lover, like all our chai lovers. Yeah. So moving on to our next question, what do you love most about your profession? My profession? The best part is that we can employ people and we can give the employment opportunity most of the people those who come with the skills to our door. So this is the best part कि एक फैमिली हमारे वजह से अगर चल रही है किसी एक भी आदमी एम्प्लॉय होता है अच्छा उसको अच्छी सैलरी मिलती है तो उसका पूरा घर चल जाता है उससे. So this is the best part I think, and I've seen people of the potters community. We used to visit to potters community in their villages. So initially वो अपने बच्चों को इसमें employ करते थे, खाना मतलब उनको स्कूल भी नहीं भेज पाते थे. Now they are able to send their children to school, और अभी वो खुद employ कर रहे हैं दूसरों को. So this is the best part in the entrepreneurship. Yeah, that is the kind of thing you have been doing, and it's like it feels great to hear that people can give employment at this point of life. And moving on, to what do you attribute your success? See, to acknowledge my success, I'm still struggling. I would say I'm still learning and still struggling. I have not succeeded yet, but there are many factors those who help us to come and to came across and sail across this, journey. So first of all, my parents, of course, those who sent me there out of the nest. कि पहले मैं एक घोंसले में था जहाँ पे मेरे को बहुत सारी प्रिविलेजेस मिलती थी, घर का खाना मिल जाता था, घर के कपड़े नहीं धोने पड़ते थे खुद से. फिर उन्होंने मुझे हॉस्टल में भेज दिया where I have to do so many things, like I have to wash my own clothes, press it, and then स्कूल खुद उठ के जाना हर चीज. So they send me there उनके पैसों से. मैं बहुत सारे जुगाड़ सिखाया बचपन में, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई. That is one, and then second, my family is my friends. So I learned so many things and they helped me a lot, and they're still helping me and this organization as a whole to grow. So the second one is my family come friends. Yeah. It feels good to hear that your family is still your priority, because after success people forget it. So yeah, we inspire you there. Moving on, if you had one piece of advice to someone just starting out their business, what would it be? The advice for those who want to start the business, that's what you're asking? Yeah. I think courage is very important. Courage is very important. अगर आपको जो अगर आप entrepreneurship के लिए अगर pursue करते हैं
Right. सो आपका वो एम हो, जो लक्ष्य होता है, उसको पाने के लिए आपके अंदर जिगरा होना चाहिए, बिकॉज Right. देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच कम्स इन द मिडिल, जिसको Yeah. आपको फेस करना पड़ता है, और वो फेस करने की क्षमता, उस फेस करने की ताकत आपको तभी आपको मिलती है जब आपके अंदर करेज हो उस चीज का, Yeah. उस चीज को सेल थ्रू करने का। फॉर एग्जाम्पल देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल एंड बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है इस चीज में, जो कि आपको कभी किसी भी स्कूल में ना, आपको कभी ऐसा इन जनरल भी नहीं पता रहता कि ऐसी प्रॉब्लम भी आती है एंटरप्रेन्योरशिप में। Right. सो आई थिंक करेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, you have to be courageous enough if you are starting something. I hope our audience marks this word courage so that they can go ahead with their entrepreneurship. Moving on, sir, considering the fierce competition in today's business world, how would you highlight your company's competitive advantages? What makes it stand out in the crowd? Well, either be the best or the first. We are both. We started in 2016. Now there are so many people, those who have started the same venture and using, Cooler Chai and the same concept, Sutta Bar. Even they are using the same name somehow. I mean, we have the intellectual property right of India. We registered in the VPO. Nobody can use our name, but still people are using and copying it. I mean, the brand always has to go through this thing, that the copied material. And as far as the competition is concerned, I always take competition as a very positive thing, because if there Yeah. will be no competition, there will be the monopoly, and monopoly is a very bad for the society. अगर Exactly. 10 चाय की औकात 10 रुपए की है, it is the basic necessity in the Indian society. अगर 10 रुपए की औकात है चाय की, मैं मोनोपोली करूंगा तो मैं 1 लाख की एक चाय बेचूंगा, Yeah. और कोई उसमें इनोवेशन नहीं रहेगा, फ्लेवर्स निकल के नहीं आते हैं। अगर वी हैव करंटली 7 फ्लेवर्स ऑफ टी, सो अगर मोनोपोली होती तो मैं एक ही चाय बेच रहा होता बस, Yeah. That is. फ्लेवर टी नहीं बेचता। सो ये चीज है बहुत सारी जरूरी। तो मेरे को लगता है कंपटीशन इज वेरी, और जो हम लोग का जो एज पॉइंट है, द एज फैक्टर इज दैट वी पायोनियर, and still we are ahead. We are selling more than 3 lakh puller in a day. Nobody, not even the Indian Railways, leave the cafes and the competition, not even the Indian Railways Yeah. sells more this much amount of puller tea. Okay. That is like Kullar Chai is being famous of yours. We have already heard a lot about it. What do you think are the most important qualities of a successful entrepreneur? See, to take everyone along, I Yeah. think it is very important. Yeah. क्योंकि अगर आप अकेले आगे बढ़ेंगे, आपकी टीम और आपके जो साथ में, जो जिसने आपका साथ दिया नहीं है ना, Yeah. तो पहली बात तो उनको एंगेजमेंट नहीं मिलेगा और आपको सुख नहीं मिलेगा उस चीज का। यू आर मूविंग अहेड अलोन, दैट इज नॉट। आपने जैसे फैमिली की बात की कि फैमिली और फ्रेंड्स को भूल जाते हैं सक्सेस, मतलब क्या सक्सेस का? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल? Successful is being happy. Yeah. How can you be happy if you have things what you need at that point of time? So अगर मैं अगर मेरी हैप्पीनेस मेरी फैमिली ही थी हमेशा से, उनके साथ अच्छा लगता था, और सक्सेस आने के बाद वो नहीं रहे, मेरे पास सिर्फ पैसा रहा, तो मैं पैसे का करूंगा, मतलब नहीं। सो आई थिंक बोथ थिंग गोज हैंड इन हैंड, और लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सबको साथ में लेके, दैट इज वन। आप अपने बिजनेस एथिक्स को नहीं भूल, बिजनेस एथिक्स हमेशा याद रखने चाहिए। हार्डकोर बिजनेसमैन होते हैं, आई हैव सीन पीपल दोस हु डू हार्डकोर बिजनेस, बट आई थिंक बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आई लर्न दैट डूइंग द CSR थिंग, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री हु मेड CSR मैंडेटरी। दो हमें ऐसा लगता है CSR मैंडेटरी होने की जरूरत ही नहीं, हम लोग को खुद ही CSR अपने से करना चाहिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी इज इनहेरिटेड इन अस, दैट इज इन द इंडियन कल्चर। हम लोग ने हमेशा ये चीज, लोगों की सेवा करना, समाज की सेवा करना हमारे ब्लड में होता है। तो ये चीजें होनी चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप में, एंटरप्रेन्योर्स के अंदर। और बहुत सारी चीजें एंटरप्रेन्योर्स को, सब चीज होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स को गुड पॉलिटिशियन भी होना चाहिए कि वो बाकी सारे एस्पेक्ट को समझे, लोगों के आने वाले पैतरों को, आने वाले जो उनकी स्ट्रैटेजीज है, उसको भेदे एंड और अपनी स्ट्रैटेजीज को आगे रखे, खुद को आगे रखे, तभी वो मार्केट में सस्टेन कर पाएगा। Okay, sir. So now tell me, what are your shortcuts to successfully deal with stress and frustration? Self-motivation, I think. Everybody can be demotivated at some point of view. After all, we all are humans, हम सब demotivate हो जाते हैं। तो उसे करने के लिए सबसे जरूरी है खुद से मोटिवेट हो यार, कि हमने ये किया, हमको इतने लोग चाहते हैं, नहीं हो पा रहे हो तो देयर आर हैक्स। जैसे कि आप जैसे मैं अपनी मम्मी का राजा बेटा हूँ, तो अभी जब भी कभी बेकार लगता है तो
मैं सीधे मम्मी को फोन कर लेता हूँ और वो मेरे को बहुत अच्छे एनकरेज कर देती है. सो कीप एनकरेजिंग योरसेल्फ. का डीमोटिवेट होना इज फाइन, लेकिन उससे जल्दी कौन निकल के बाहर आता है, इसी की तो होड़ है. डीमोटिवेट होके कौन जल्दी उससे बाहर निकल आके काम कर जाता है, उसी की होड़ होती है. सो डीमोटिवेट होके उससे जल्दी हो जाना, ये हमेशा याद रखना कि भैया डीमोटिवेशन इज होना इज फाइन, इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, लेकिन उससे जल्दी बाहर निकलना ही है आपको कैसे भी. So the similar contrasting question I have for you is that how do you motivate your team to perform outstanding, like always in all performances, all fields? How do you manage that? See, the people, those who are working under our organization are not money oriented, they are mission oriented. So we have the mission to make this company a global company, which we already are a global company, to make this brand the world's biggest brand, biggest hot beverages brand, जो इंडिया से हेल करे और पूरे देश पूरी दुनिया में हम लोग इस चीज में आगे बढ़े. जैसे कि मैकडॉनल्ड्स ने इंडिया में आके इतना पूरा कैप्चर किया, तो हम भी जाके हर जगह विदेशों में जाके कैप्चर करें वहां के मार्केट को, टू कॉन्कर ईच एंड एवरी मार्केट. हम लोग का विजन है. एंड टू गिव सॉर्ट ऑफ पर्क्स. कोई भी अच्छा काम करता है तो ही शी डिजर्व पर्क्स, तो हम लोग पर्क्स देते हैं सबको. तो अलग अलग पर्क्स देते हैं एम्प्लॉइज को. And as I told you, most of the people, those who are working here, are not money oriented, they are mission oriented. जो मिशन के लिए काम करता है उसको ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही करता रहता है. Right, right. Okay. So now share some of your failures and the best lessons you learned from them. Failures. See, there are so many of failures because I tried CAT, I tried CA. ये सब नहीं हुआ मेरे से. एग्जाम प्रोसेस से बात करें तो यूपीएससी के प्रिपरेशन की बीच में छोड़ दी, नहीं हुआ. These are all our failures and the outcomes are what I learned from there is I already implementing it in my business. The jugaad, the tactics, the things which I learned from that. And as far as the CA is concerned, CAT is concerned, we are already hiring. We have 3 teams of CA, and CA is the entire financial accounts team which we have in house. We are recruiting not just from IIM but from IIT from last 3 years. So yes, this is the outcome. Okay. So, sir, my last question to you would be: how did you raise funds initially, and are you still looking for investors for the company? So the initial funding is done by Mr. Anand, my partner and my friend from last 15 years. He had this business of kapade ka with his Jiju. He winded up and he got 3 lakh rupees from that, and we started from that 3 lakh rupees. I cannot ask money from my father because मैंने उनको बताया था. According to him, I was in Delhi and was preparing for UPSC. Whereas I came here and I started this venture with Anand. So 3 lakh rupees initial funding came from Mr. Anand, and as far as now, we are currently bootstrapping from last 5 years. As of now, we don't require that much of funding, but yes, not immediately, but in the coming future, definitely we will be requiring the money. And yes, we will be raising funding soon. Yeah, I hope, I wish you all the best so you can raise the fund or achieve all the success you want. And that's all for today. It was pleasure having you here, and I hope our audience understand your viewpoints, as you are the youth of our nation, already growing youth. So they can grasp the words as I did, like jugaad, courage, and all that stuff. So it was great having you here. Thank you for joining us, and we hope that we could have more interviews in future with you. Thank you so much. Thank you so much.